Good morning students, this is Monica from Askia Public School. So today we will talk about ETF, okay. So about the meaning and introduction part we have discussed in the previous video. So in this video we will talk about what are REIT, okay. Then we will talk about gold ETF, okay, gold ETF. So what are gold ETF and REIT, okay. So as ETF we have discussed means exchange traded fund, exchange traded funds. Now we came to the REIT. It means real estate investment trust. So what is this? This is type of a mutual fund scheme only. जैसे mutual funds की scheme होती है, this is also that type only. In this also money, as in mutual fund, money is collected from the investor by initial offer of the securities. Okay. So in this, the money is invested further in the real estate, in the properties. Okay. For example, in warehouses, shopping mall, okay, or we can say complex. So there are many type of schemes in the real estate also. Money is invested from the investor, taken from the investor, collected from the investor, and then it is further invested in the real estate, in the properties. Okay. So in this return is given to the investor, कि इनसे जो return मिलता है वो investor को दिया जाता है. Like in mutual fund also part of profit is given to the investor. Okay. So mainly in this what happen, the investor can directly also sell and purchase this type of scheme directly from the stock exchange. Okay. So it is registered with the stock exchange. This is registered with stock exchange. So the investor can directly invest from there also. Okay. Then we have gold ETF. Gold ETF, gold exchange traded fund. Okay. Gold ETF means gold ETF. It is also called GETF. What it means? Gold exchange traded fund. Okay. So what is this? Gold exchange traded fund, or we can say GETF, means exchange and buying and selling of gold take place. Okay. Buying and selling of gold take place in this. So in this also people invest their money in gold. So as we all know that Indians are known as the big buyers of gold. जो इंडियन लोग हैं वो गोल्ड के सबसे बड़े बायर्स माने जाते हैं. ओके. एंड गोल्ड इज ऑल्सो एन एसेट. गोल्ड क्या है? वो एक एसेट है. ओके. एंड पीपल होल्ड गोल्ड फॉर देयर चिल्ड्रन मैरिज एंड अदर डिफरेंट टाइप ऑफ पर्पस. But if we think at the present time situation or with the changing in the time pattern, people are not holding more gold in physical quantities. Okay. They think it is risky holding gold in a physical form. Okay. So holding gold in physical form can be risky. Why? Because first it can be we can say fear of theft. चोरी का डर रहता है कि चोरी हो सकती है. ओके. देन नो surety of purity, or we can say no surety of pure, कि प्योर कितना होएगा उस फॉर्म में हमें ये भी श्योरिटी नहीं होती है. ओके. देन वी हैव locker cost. If people are holding gold in physical form in the locker, means
locker it is safe. But if they are holding it in locker, then there is cost of keeping gold in locker. जो बैंक है या लोकर में जो लोग रखते हैं बैंक में, तो बैंक उनसे क्या है, एक चार्ज लेता है, मतलब पैसे लेते हैं, चार्ज किया जाता है होल्ड करने के बदले में कि गोल्ड उनका सेफ है वहाँ पे, बट बैंक हैव टू चार्ज सम मनी, कुछ पैसा है वो बैंक चार्ज करेगा. ओके, बट इफ पीपल आर होल्डिंग गोल्ड इन ETF फॉर्म, मीन्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, सो देर इज ऑल्सो नो रिस्क ऑफ लॉस, कि उनको जो मीन्स वी कांट से प्योरली कि नो रिस्क, बट देर इज लेस रिस्क, कि जो रिस्क है वो कम होता है. वाई? बिकॉज द प्राइजेस ऑफ गोल्ड देर इज लेस, या वी कैन से डिफिकल्टली प्राइसेस ऑफ गोल्ड मैनिपुलेट, कि जो गोल्ड के प्राइसेस हैं वो मैनिपुलेट नहीं होते हैं. और वी कैन से कि डे बाय डे इट इज इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, सो वो डिक्रीज तो नहीं होंगे, इंक्रीज ही होते जा रहे हैं. सो इफ वी सी फ्रॉम द हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री से देखा जाए तो गोल्ड प्राइस आर इंक्रीजिंग, एंड इफ पीपल आर होल्डिंग गोल्ड इन ETF फॉर्म मीन्स दे आर गेटिंग रिटर्न ऑल्सो, कि वो गोल्ड के जो ट्रेड है उसमें पैसा लगा रहे हैं, तो इट मीन्स दे कैन सेल दैट ETF इन ऑन द गोल्ड प्राइस, की फ्यूचर में वो अपने उन ETF को बेचना चाहे तो गोल्ड के प्राइस पे वो उनके बिकेंगे. इट मीन्स दे हैव द गेन फ्रॉम दैट, उससे उनको क्या है, गेन हो रहा है, मिल रहा है. ओके, सो पीपल आर प्रेफरिंग दिस डेज गोल्ड ETF. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस कॉजेज, की चोरी का डर होता है, जो क्वालिटी है उसकी श्योरिटी नहीं होती है कि मतलब प्योर है या नहीं, देन लोकर है उसकी भी कॉस्ट आती है. ओके, so gold ETF day by day it is increasing, and there is also we can say benefit investing in gold ETF. Now the working of we can say ETF and G-ETF take place. As we know, all these are registered under the stock exchange. So ETF G-ETF is open-ended scheme. Open-ended. So what it mean open-ended? It means any time sale and purchase of this take place. Okay, sale and purchase of gold take place. It means the investor who is holding money, who is holding ETF, G-ETF, जो gold का ETF hold किए हुए हैं, and the person want to sell that ETF, अगर वो sale करना चाहता है, okay, want to sell that ETF, so he can sell that ETF at any time, whatever at the whatever price he has bought that, जिस प्राइस पे उसने उसको खरीदा था उसी प्राइस पे किसी भी टाइम इसको बेचा जा सकता है. ओके, एट एनी टाइम एनीवेयर. बट इन ETF it is also open ended scheme. This one is also open ended scheme, but if the investor want to sell their ETF, so it is not possible to sell at the same price, at the price he has bought that ETF, जिस पे उसने वो खरीदा था, बाय किया था, उसी पे उसको सेल करना पॉसिबल नहीं होता. द प्राइस वैरी इन ETF. जो ETF में है, एक्सचेंज ट्रेड फंड है, उनमें जो प्राइस है वो वेरी होते रहते हैं, मीन्स फ्लक्चुएशन होती रहती है. बट इन गोल्ड ETF देयर इज नो फ्लक्चुएशन. द प्राइस means whatever price he has bought, at the same price the investor can sell that. Okay, so the working of we can say G-ETF or ETF take place in an open-ended scheme. Open-ended scheme में इनकी working होती है. At the investor can sell and buy at any time at any price. means जो भी प्राइस चल रहा होता है उस प्राइस पे किसी भी टाइम वो उसको सेल कर सकते हैं. इफ देयर इज एनी न्यू फंड ऑफर, अगर कोई नया फंड मीन्स न्यू ऑफर आया है, then if investor want to sell, then the AMC decide that price, that at what price he will purchase. Okay, and the AMC, if the investor want to sell that, then the AMC purchase at the prevailing price. जो भी प्राइस चल रहा होता है उस पे जो AMC है वो उसको परचेज कर लेती है. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस इज अबाउट द REIT, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट.
means money is collected through initial price offer, okay, and that money is invested in further properties, we can say warehouses, shopping mall complex, etc. Then we have gold ETF, GETF, gold ETF. In this also money is invested like the same pattern, money is taken from the people, but the risk of investing money in GETF is less because there is less fluctuation of the price in GETF, okay. The people can get more benefit by investing in this. If the people want to invest, regular invest in GETF, so they for long term, for 20 or 25 years, so they can get a huge benefit from this by investing in GETF, okay. So we have discussed about the real estate investment fund and GETF, gold exchange traded fund. So read this from your book, also watch the video. If you face any problem, any doubt, you are free to ask. Thank you.